Good morning, students. Welcome to all of you in the Mongnale biology classes. Myself, Professor Gunnar Mongnale, and student in the last class, we have discussed about the characteristics of living organisms. Properties of living organisms were discussed in the last class, and among that different properties, basically 5 types of properties are found in the living organisms. That is growth, reproduction, metabolism, then consciousness and cellular organization. So out of the 5 properties, we have already discussed 2 properties in the last class, that is growth and reproductions. Growth is non-differing property of the living organism because growth occurs in the living as well as non-living matter. Okay, and reproduction is also called as non-differing property of the living organism. Why? Because reproduction is occur in the living organism, but every living organism cannot reproduce. हर एक living organism reproduce नहीं कर पाता, इसलिए उसको हम बोलते हैं what? That is called non-definitive property कहते हैं, ठीक है? इसको reproduction को. आज हम थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, किसके लिविंग ऑर्गेनिज्म की थर्ड प्रॉपर्टी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. ओके, मेटाबॉलिज्म. If the cell is living, that cell is work continually. Okay, when the cell is living, the cell having protoplasm. Protoplasm consists of nucleoplasm plus cytoplasm, and when the cell is living, at that time cell help to perform the activity of metabolism. And what is metabolism? Metabolism includes 2 phenomena in it. मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 एक्टिविटी होते हैं. वन इज anabolic activity and other is catabolic activity. Okay, anabolic activity is also called as constructive process and catabolic activity is also called as destructive process. Destructive process, breakdown. So anabolism की वजह से क्या होता है? Anabolism help in the growth of organisms and catabolism help in the senescence of organisms, old organism dead. Okay, जब catabolic activity बढ़ती है तो organism senescence हो जाता है, old हो जाता है, body की activity destroy हो जाते हैं, biomolecule breakdown हो जाते हैं. Okay, so it is called a destructive process, breakdown process, and anabolic is called as constructive process. Okay, body molecules, बायोमोलिक्यूल बिल्डअप होते हैं, बन जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस. सो मेटाबॉलिक प्रोसेस इज one of the property of living organism. So what is metabolism? It is the sum total of all biochemical reaction take place inside the living systems. Sum total of all biochemical process occur inside the living systems, occur inside the living cell is called as metabolism or metabolic reactions. What is this? Sum total of all the biochemical reaction occur inside the cell, occur inside the living system is called as metabolism, and it is also called as defining feature of living organisms. Because remember, metabolism only found in the living organism which having protoplasm in it. living cell के अंदर जब protoplasm रहता है, okay, उसी में metabolism होता है. Inside the dead cell there is no protoplasm. No protoplasm means no metabolism there, and no metabolism means no any kind of reactions occur in the body of that cell or body of that organism. Okay, so that's why metabolism is also called as metabolic reaction occur inside the living system, occur inside the living organisms which having protoplasm in it, and in that metabolism, okay, anabolic and catabolic process are involved, that is constructive and destructive process are involved. Okay, so called as metabolism. Okay, this is about definition. What is metabolic definition? Sum total of all biochemical reaction occur inside the body, occur inside the living system is called as metabolism. Okay, next, metabolic reaction can be demonstrated outside the body also. Remember, metabolic reaction is generally occur inside the cell, but we can demonstrate that reactions, we can show that reactions in the laboratory also, outside the body also. Okay, and free systems, that is cell free systems. मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है हम बॉडी के बाहर भी दिखा सकते हैं. बॉडी के बाहर भी होती है, सेल के बाहर भी होती है, सेल फ्री सिस्टम में भी होती है.
जैसे कि आपको पता है फर्मेंटेशन जो होता है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है सेल के बाहर भी हो सकती है। इसका मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ओके या केमिकल रिएक्शन जो है वो सेल फ्री सिस्टम में भी होते हैं। दैट मींस इट इज demonstrate outside the body and instead of metabolic reaction it is in vitro. In vitro means artificially outside the body under controlled condition. ओके सेल के अंदर हुई रिएक्शन तो क्या बोलेंगे इन विवो, नेचुरली हुई तो इन विवो, सेल के अंदर हुई तो इन विवो, एंड आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड द सेल controlled condition artificial is called as in vitro. So isolated metabolic reaction means those reactions were controlled by human being. That means temperature, light, enzyme, that all substrate, product, we can all maintain, we can all regulate, and that's why when we regulate all chemical reactions, all the products are called as isolated metabolic reactions, and that isolated metabolic reaction is called as man-made process, and it is occur in vitro, are not living things but are living reactions. और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, isolated metabolic reaction is in vitro and are living things but are but are living reactions. Okay, not a living things. Isolated metabolic reaction जो है लिविंग थिंग्स में नहीं होते मगर वो रिएक्शन लिविंग है, लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं हम उसको। इसको आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कॉल्ड एज व्हाट लिविंग रिएक्शंस but not occurring living cells. Okay, living systems. Next is fourth property of the living organism is, already we have discussed about three properties. Now fourth property of the living organism is, that is cellular organization. Fourth property of the living organism is cellular organization. What is the meaning of cellular organization? Cellular organization means every living organism, that may be unicellular or multicellular organisms, that may be prokaryotic or eukaryotic organisms, every living organism is made up of cell. Okay, and that's why cell is called as fundamental unit of life, because wherever there is a cell there is a life. जहाँ पे cell है वहाँ पे life है, and that's why for formation of life, for formation of living characters, okay, cell is essential, and organisms are made up of one or more cell. Those organisms which are made up of single cell, one cell, are called as unicellular organism. आपको पता होगा unicellular organism दो रहते हैं, एक प्रोकैरियोट्स उसको हम मोनोरा कह सकते हैं, एंड दूसरा है प्रोटिस्टा. ओके, ये दो ऑर्गेनिज्म जो है, these two organisms are called as unicellular organisms, and others are multicellular. That means fungi, plants, animals are called as multicellular organisms. They are made up of many cells, and it is the defining feature of living organisms. Remember, cellular organization is also one of the defining features, defining property of living organism. That means it is 100% occur only inside the living organism. Cellular organization is only found in the living organisms, not in the dead body. Cellular organization खाली living body में हो सकता है, living organism में हो सकता है, dead organism में, dead body में cellular organization नहीं हो सकता. So this is about the one of important properties, important characteristic of what living organism, that is called as cellular organization. It is the ability of organism to now next is last, consciousness. Fourth property we have discussed, that is cellular organization. Okay, and in that cellular organization there are different kinds of cells are there to work, to perform special function in the body. Okay, and you know the cell combine to form tissue. Generally in organism what happen, cellular organization help to form cell into tissue, tissue into organ, organ into organ system, and finally organ system into organism, also called as body. So this is about cellular organization, help in the formation of cell to all these. सेल है तो टिश्यू है, टिश्यू है तो ऑर्गन है, ऑर्गन तो ऑर्गन सिस्टम है, और ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गेनिज्म बनता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऑर्गेनिज्म है.
ऑर्गेनिज्म क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ऑर्गन है। ओके, आप बोलेंगे सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कहाँ ऑर्गन है? उसमें ऑर्गन नहीं है, मगर उसमें सेल ऑर्गेनेल्स है ना। सो सेल ऑर्गेनेल्स हो या फिर ऑर्गन हो, जो जिसमें ऑर्गन है, जिसमें ऑर्गेनेल्स है, उसको हम ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। और जिसकी क्या बनती है? बॉडी बनती है। सो दिस इज अबाउट द cellular organization, is one of the property of living organisms. Okay, next one is another characteristic is consciousness. Fifth property, fifth number character of living property of living organism is, fifth property of living organism is consciousness. Consciousness. Okay, consciousness is also called as awareness, alertness. Okay, alertness of the organisms, responsiveness of the organisms. Okay, what is consciousness? Ability to give response, ability to receive stimuli. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है? सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से स्टिमुलाई रिसीव करता है एंड उसको रिस्पॉन्स देता है। उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। एंड कॉन्शियसनेस इज आल्सो कॉल्ड एज, it is also called as sensitivity. Another term of the consciousness is sensitivity. What is sensitivity? Having sense organs, and sense organs are the organ which receive the stimuli from surrounding environment and give proper response are called as sensitivity and sense organ. Okay, so what is the consciousness? Consciousness is the ability of organism to sense their environments. आपको पता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, एनवायरनमेंट को फाइंड आउट करते हैं, एनवायरनमेंट में अडॉप्टेशन करते हैं, अलग अलग हैबिटेट में सर्वाइव होते हैं। व्हाई? ड्यू टू देयर कॉन्शियसनेस, एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंटल स्टिमुलाई। they are having ability to sense their environment and response to the environmental stimuli like light, water, temperature and other organisms, या other organisms such as chemical and pollutant also. For example, आपको पता है, आपको आपने सुना होगा लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लाइकेन जो अल्केन फंगाई से बनता है। दे आर नॉट ग्रोइंग इन द पोल्यूटेड एरिया, मीन्स उसको पोल्यूटेड एरिया में ग्रोथ होने की कैपेसिटी नहीं है, मीन्स उसको क्या है? कॉन्शियसनेस है। ओके, एक्चुअली वो तो वेरी लोअर ऑर्गेनिज्म अल्गी फंगाई, उसमें कहाँ कॉन्शियसनेस रहेगा? और फिर भी हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? सर्वाइव होने के लिए कुछ उसकी एबिलिटी होती है कि जो सेंसिटिविटी की वजह से, दे आर सेंसिटिव टू पोल्यूशन। हु? लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन। सो व्हाट इट मे बी, प्लांट हो, algae हो, फंगाई हो, any organisms, whenever they are receive the stimuli from the environmental stimuli they receive, light, temperature, etc., chemical and pollutant, etc., and giving response are called as consciousness. So consciousness is one of the important property of living organisms. याद रखिए, plants are having less stimuli, plants are having less consciousness as compared to animal. एनिमल में कॉन्शियसनेस ज़्यादा रहता है, नर्वस सिस्टम ज़्यादा डेवलप होते हैं, प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं रहती है या फिर उसमें कॉन्शियसनेस कम रहता है। एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म्स आर अवेयर टू देयर सराउंडिंग। जैसे कि आपको पता होगा, आप बोलेंगे सर प्लांट में कैसे होता है कॉन्शियसनेस? फॉर एग्जांपल आपको पता होगा टच मी नॉट प्लांट्स, माइमोसा पुडिका, जब आप उसको लीफ को टच करते हो टच मी नॉट प्लांट को, तो क्या होता है? उसके लीफ क्लोज हो जाते हैं। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, आपने कौन सुना होगा जो इंसेक्टिवरस प्लांट है, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। व्हाट इज इंसेक्टिवरस प्लांट्स? जो इंसेक्ट को ट्रैप और किल करते हैं ना, दोस प्लांट्स हु ट्रैप एंड किल द इंसेक्ट इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवरस प्लांट भी क्या करते हैं? कॉन्शियसनेस रहता है, उसमें स्टिमुलेशन होता है, और जैसे भी इंसेक्ट आता है वो उसको ट्रैप करते हैं, उसको किल करते हैं। सो इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट्स। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अवेयर होता है, एंड इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो रिमेंबर, कॉन्शियसनेस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो दीज आर ऑल बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ, एंड ह्यूमन इज ओनली द ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जिसको सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है मतलब अवेयरनेस है। ओके, हम सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करते हैं। ओके,
एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस occur in the human body. So this is about all 5 properties of living organisms. Okay, ये पूरे 5 प्रॉपर्टी हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म के. कौन कौन से? वन इज, और एक बार बोल रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे हमने. कौन कौन से 2 कैटेगरीज? वन इज नॉन डेफिनेटिव. नॉन डेफिनेटिव मीन्स नॉट फिक्स. नॉन डेफिनेटिव मीन्स नॉट फिक्स. और नॉन डेफिनेटिव में आपको बोला था मैंने, पहला था ग्रोथ, दूसरा था रिप्रोडक्शन. ओके, ग्रोथ में आपको बोला था मैंने एक्सट्रांसिक ग्रोथ, एक्सट्रांसिक ग्रोथ मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ, एंड इंट्रांसिक ग्रोथ मतलब इंटरनल ग्रोथ. और जो इंटरनल ग्रोथ होती है ड्यू टू सेल डिवीजन होती है. और रिप्रोडक्शन में मैंने बोला था आपको देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वन इज asexual reproduction and other is sexual reproduction. So this is about all properties of non-defining property means not found in every living organism, may be found or may not be found. Non-definitive means may or may not be found in the living organism, is called a non-definitive characteristics. And second one is definitive characteristic of living organism. That means they are 100% found in other organisms. Every living organism having that property called as definitive properties. Okay, so ये नॉन डेफिनेटिव ये बताया मैंने. डेफिनेटिव में कौन कौन आ रहा है? डेफिनेटिव में सबसे पहले इन डेफिनेटिव प्रॉपर्टीज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इंक्लूड अगेन 2 प्रॉपर्टीज, दैट इज anabolism and second one is catabolism. Okay, constructive as well as destructive process called as metabolism. Okay, another property we have discussed is that is cellular organization. In that cellular organization there are 2 types of cell, unicellular and multicellular. Prokaryotic and eukaryotic cells are called as cellular organization, properties of living organism. And final property we have discussed here, that is consciousness also called as sensitivity. Self consciousness found in the human being and other organism also. So all these are the properties of living organism. हम आज प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिस्कस किए हैं. कल मैं आपको डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग वर्ल्ड में कैसे डाइवर्सिटी आपको मिलती है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा. थैंक यू, हैव अ गुड डे. Seen in lower organisms through budding as seen in yeast, or through fragmentation as observed in flatworm. However, certain organisms, such as sterile worker bees, are not capable of reproducing. But that doesn't mean they are non-living. Reproduction is therefore not a definitive characteristic of the living. Metabolism is also a characteristic of living organisms. We know that organisms are made up of chemicals. These chemicals are constantly produced in living beings and converted into biomolecules. These conversions are called chemical or metabolic reactions. The sum total of all such reactions is known as metabolism. It is interesting to note that such chemical reactions can also be imitated in a laboratory. However, such isolated reactions taking place in vitro are not considered living organisms, but are classified as living reactions. We can therefore state that metabolism is a definitive feature of living organisms.
Cellular organization is another important characteristic of living organisms. Such organization is not observed in the non-living, and hence cellular organization is also a definitive feature in all life forms. Consciousness is another feature associated with living organisms. We know that all living organisms sense and respond to environmental stimuli such as light, water, and temperature. For instance, a sunflower always faces the sun. Humans too respond to environmental stimuli and are aware of their surroundings and themselves. For instance, in winters, they wear woolens to keep their bodies warm. Non-living objects don't respond to external stimuli. Consciousness is therefore another definitive characteristic of a living being. Thus we can say that metabolism, cellular organization, and consciousness are the three definitive characteristics of living organisms. Earth is a diverse planet with millions of different types of fungi, plants, microorganisms,